अस्सलाम वालेकुम क्लास, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। सो टुडेज अवर टॉपिक इज अ वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग बाय जॉन डन। जी, आज हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में भी जॉन डन की पोइम्स कर रहे थे। आज भी जो है हम जॉन डन की एक पोइम करेंगे, दैट इज अ वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग। तो आज हमने ये देखनी है पोइम और इसके साथ डील करना है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द जॉन डन, सो जॉन डन इज अ 17th century writer. He is also a politician, he is a lawyer, he is a priest, and he is a writer. Basically he wrote a lot of things, he wrote a lot of poems. A valediction forbidding mourning. When we talk about the valediction forbidding mourning, so this is the poem that he wrote on the occasion of parting from his wife Annie Mordaunt in 1611. So John Donne was going on a diplomatic mission to France. He is leaving his wife behind in England. So basically he wrote this valediction as a farewell speech. So he wrote this valediction because he is writing about the separation. He is writing about the separation from his wife. So basically this is the farewell speech. So this poem cautions against grief about separation and affirms the special particular love to speakers and his lovers share. So basically in this poem he is right about the separation, he is right about the grief about the separation, and he is right about the particular love that he and his wife shares between. So like most of Donne's poem, it was not published until after his death. So basically when we talk about the poems of the Donne, so a lot of poems published after the death of the poet, after the death of the John Donne. So this is the also a particular poem. This is also the poem that published until after his death. After the death of the poem, after the death of the poet, this basically poem published. So फर्दरमोर जब हम बात करेंगे इस पोइम को की, तो इस पोइम को जो है हम स्टार्ट करते हैं। ये पोइम भी जो है राइटर की डेथ के बाद पब्लिश की गई थी। ये पोइम जो है इसके अंदर क्लियरली मैंने बता दिया है कि उस वक्त ये पोइम लिखी गई थी जब राइटर अपनी वाइफ से जो है वो अलग हो रहा था। सो एज virtuous men pass mildly away and whispers to their souls to go, will some of their sad friends do say, the breath goes now, and some say no. So let us melt and make no noise, no tear flutes, no sigh tempts move. 'Twere profanation of our joys to tell the lady or love. Moving of the earth brings harms and fears. Men reckon what it did and meant, but temptation of the spheres, though greater, far is innocent. Come on back to the first paragraph. As virtuous men pass mildly away and whispers to their souls to go. So in these lines, basically writers opens with an image of a good man, and he is describing and he is representing a man who is dying quietly and softly, and he is urging his souls, and he is urging their souls to leave their body. So will some of their sad friends do say, the breath goes now, and some say no. So these virtuous deaths are so impracticable, and that the dying man's friend disagree about whether or not the men have stopped breathing yet. So basically in these 4 lines, writer representing the man who is dying quietly, who is dying softly, and who is urging his soul to leave his body. So basically the virtuous deaths are impracticable, and the dying man whose friends disagree because his friend is not agree with him, and his friend that he is the man who is not stopped breathing yet. He is not breathing yet. He is not stopped breathing yet. So basically writer एक ऐसे आदमियों की जो है वो इमेज क्रिएट कर रहा है जो कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मौत की तरफ जा रहे हैं, जो आहिस्ता और अपनी जो रूह है उसको तैयार कर रहे हैं कि वो जिस्म को छोड़ दे। और ऐसी जो है मौत की बात कर रहा है कि जिसके अंदर जो है राइटर का जो दोस्त है, जो दूसरे दोस्त हैं, वो बात कर रहे हैं, वो डिसएग्री कर रहे हैं कि अभी तक जो आदमी है उसने अपनी सांसें नहीं छोड़ी, वो अभी भी सांस ले रहा है। ही इज नॉट डाई येट, ही इज dying quietly, softly, and he is preparing his soul to leave his body.
So furthermore, so let us melt and make no noise, no tears, floods, no sigh attempts move. Twere profanation afford joys to tell the lady or love. So in these lines, the speaker argues that he and the lover he is binding favor to should take these deaths as a model and part ways silently. He is talking about he is arguing that they shouldn't give in the temptation to weep and sigh excessively. In fact, grieving so openly would degrade their private love by broadcasting it to the ordinary people. So basically speaker यहाँ पर argue कर रहा है, जो writer है वो argue कर रहा है, वो कह रहा है कि अगर हम इस दुनिया को छोड़ रहे हैं, अगर हमारी ये farewell है, अगर हम इस दुनिया से जा रहे हैं या हमारी separation हो रही है, not about the death, अगर हम separate हो रहे हैं, अगर हमारी death जो है वो हमारे करीब है, तो हमें जो है इस डेथ को जो है वो अपना लेना चाहिए बहुत खामोशी के साथ. हमें खामोशी के साथ इस डेथ को जो है अपना लेना चाहिए. हमें जो है बहुत रोना नहीं चाहिए, हमें ग्रीफ नहीं दिखानी चाहिए, हमें जो है आहो बका नहीं करनी चाहिए. लोगों के सामने जो है हमें अपना ये जो रिश्ता है इसको रो धोकर इन आम से जो लोग हैं, ये जो ऑर्डिनरी पीपल है, इनके सामने हमें हमारा तमाशा नहीं बनाना चाहिए. थर्ड पैराग्राफ. Moving of the earth brings harms and fear. Man broken what it did and men, but trepidation of the spheres, the greater far is innocent. So basically in these lines, natural earthly disturbance such as earthquakes hurt and scare human beings. So ordinary people notice these events happening and wonder what they mean. However, the movement of the heaven, while being larger and more significant, go unnoticed by most people. So यहाँ पर राइटर बात कर रहे हैं कि जो नेचुरल डिस्टर्बेंस होती है जमीन के ऊपर, जैसे कि अर्थक्वेक्स आ जाते हैं, हर्ट होता है इंसान या उसको स्केयर हो जाता है किसी चीज से या स्कार्स आ जाते हैं, तो ये ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है. तो वो कहते हैं कि जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं, जो आम से लोग होते हैं, वो इन इवेंट्स को होते देखते हैं और ये इस चीज के बारे में सोचने लग जाते हैं कि इनका मतलब क्या है, ये क्यों हो रहे हैं. और बहुत से मूवमेंट्स ऐसे होते हैं हेवंस के अंदर जो कि बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं और बहुत से लोग जो है वो इसको नोटिस ही नहीं कर पाते. बहुत से लोग जो है वो इनोसेंट होते हैं, वो इन चीजों को नोटिस ही नहीं कर पाते कि इन सारी चीजों का मतलब क्या है. डल Slumbery lover's love, whose soul is sense cannot admit. Absence because it doth remove those things which alimented it. But we by our love so much refined that ourselves know not what is. Enter assured of the mind, careless eyes, lips and hands to miss. Over two souls therefore which are one, though I must go endure not yet a breach, but an expansion like gold to airy tiniest beat. जी, तो वापिस आते हैं हम अपने फर्स्ट पैराग्राफ के ऊपर, थर्ड पैराग्राफ के ऊपर, इस पेज के फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर, जिसके अंदर जो है वो राइटर ने लिखा हुआ है उन नेचुरल चीजों के बारे में. अच्छा जी, अब वो बात कर रहा है dull submarine lover's love whose soul is sense cannot admit. जी, अब वो कह रहा है boring commonplace people feel a kind of love that because it depends on sensual connection cannot be handled separation. So dull slumbery lovers whose soul is sense cannot admit absence because it doth remove those things which alimented it. So boring commonplace people feel a kind of love that cannot be exist in this world, that cannot be exist in this whole the love, because it depends on the sensual connection, because it is in the mind of the speaker, in the mind of the lover, so it depends on the sensual connection and it cannot handle separation. People who is in love, they cannot handle the separation, and being physically apart takes
away the physical bond that their love depends on. So basically in these lines the writer said that the people feel a kind of love, the people who are in love, who they feel the kind of love, it depends, so they feel the love, and the love depends on the sensual connection. If a person is in the love, if a person loves someone, he cannot handle the separation. So being physically apart, or if a person is physically apart to the other person, so being physically apart, so take away the physical bond there that their love depends on. जी, तो वो कह रहे हैं कि अगर जो बोरिंग पीपल है, जो कॉमन प्लेस पीपल है, वो अगर उनके अंदर भी एक प्यार की ताकत है, अगर वो भी किसी के साथ प्यार महसूस करते हैं, तो ये डिपेंड करता है उनके सेंसुअल कनेक्शन के ऊपर, लेकिन वो जो है वो सेपरेशन को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, और फिजिकली अगर वो एक दूसरे से अलग हो भी जाते हैं तो उनका फिजिकली बॉन्ड जो है वो दूर होगा, लेकिन उनका फिजिकल बॉन्ड दूर होगा जिसके ऊपर उनका लव जो है वो डिपेंड करता है. बट वी बाय अ लव सो मच रिफाइंड दैट अवर सेल्स नो व्हाट इट इज, इंटर एश्योर ऑफ द माइंड, केयरलेस आईज, लिप्स एंड हैंड्स टू मिस. जी, the speaker and his lover on the other hand experience a more rare and special kind of bond. They cannot even understand it themselves, but they are like mentally certain of one another on a non-physical plane. Because of this, it matters less to them when their bodies are apart. So inter-assured of the mind, they are interconnecting with their mind, they are internally connected with their mind. So basically the writer and the lover on the other hand, they experience the rare and they experience a special kind of bond. So basically writer about the bond, the writer about of the connection between the lover and between his lover. So basically he said that they are connecting with a specific kind of the bond, they are connecting with a rare and special kind of bond, so they cannot even understand it themselves, they cannot even understand their connection, they cannot even understand the specific bond they share with each other, so they can't even understand it themselves. So but they like mentally, they linked heartily, they linked mentally or certain one another on physical plane. Because of this, it matters less to them when their bodies are apart. They care less, their eyes, their lips and their hands to miss. So but they are connecting with their mind. They are not physically plain, they are not physically attached, they are attached with mentally, they are attached with emotion, they are attached emotionally, they are attached mentally, and because of this it matters less to them when their bodies are apart. So our two souls therefore which are one, though I must go endure not yet a breach but an expansion like gold to airy thinness beat. G. So basically in these four lines, the souls of the lovers are unified by love. The writer said that our two souls therefore which are one, our two souls united by love, our two people are attached with by the love. So two souls and one connection. So they share a very rare connection, they share a very strong bond. So their souls, the souls of the lover are unified and attached by the love. Although a breach but an expansion like gold to airy thinness. Although the speaker must leave, their souls will not be broken apart. So instead they will expand to cover the distance between them as fine metal expands when it is hammered. So basically writer क्या कह रहा है कि वो कह रहा है कि हम जो है एक रेयर और एक बहुत ही स्पेशल किस्म का जो है हमारे दरमियान कनेक्शन है, जिसे हम एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, लेकिन उस कनेक्शन को हम खुद भी समझ नहीं पा रहे. हम मेंटली एक दूसरे के साथ अटैच है, फिजिकली भी जो है हम एक दूसरे के साथ कनेक्शन जो है नॉन फिजिकली है, ये हमारा मेंटली एक दूसरे के साथ कनेक्शन है. और इसकी वजह से जो है अगर बॉडीज अलग होती हैं तो वो बहुत ज्यादा जो है वो मैटर लगता है. लेकिन अगर हमारी बॉडी जो है, अगर मेंटली हम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, अगर हम इमोशनली एक दूसरे से अलग हो जाएंगे तो हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाएंगे. लेकिन अगर बॉडीज अलग होती हैं तो वो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. उसके अलावा राइटर कहता है कि हम लवर्स जो है वो हम एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, हमारी रूहें जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच हैं जस्ट बिकॉज ऑफ लव, मोहब्बत की वजह से. और स्पीकर कहता है कि अगर हमें पता है कि हमें हमारी जो है वो बॉडीज को
छोड़ना पड़ेगा, हमारी जो रूह है उसको अलग होना पड़ेगा, उसको जाना पड़ेगा। लेकिन ये जो है हमारे दरमियान, ये चीज जो है हमारे दरमियान डिस्टेंस को बढ़ा देगा हम, लेकिन हमारा मेंटली जो एक दूसरे के साथ अटैचमेंट है वो खत्म नहीं हो सकती। So furthermore, if they be two, they are two so, as if twins compasses are two. They soul the fixed foot makes no show to move but dot if the other do. If they be two, they are two so, as if twins compasses are two. So in these lines, writer said that if their souls are in fact individual, they are individual. Their souls are individual. So if they are separate from each other, they are feeling the separation to each other. So basically they are nevertheless linked in the way the legs of a drawing compass are linked. The soul of the love, so the soul, the fixed foot makes no show to move but dot if the others do. So the soul are in fact individual, they are nevertheless linked in the way the legs of a drawing compass are linked. The soul of the lover is like the stationary foot of the compass, which doesn't appear to move itself but actually does respond to others' foot's movement. जी, यहाँ पर बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी जो रूहें हैं वो बेशक अलग अलग है, इंडिविजुअली हमारी एक एग्जिस्टेंस है, लेकिन हम एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट करते हैं, हम एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं। उस कंपास के हम एक दूसरे के साथ लिंक नहीं करते, जिस तरह एक लेग जो है वो ड्रॉ कर रही है और वो लिंक बनाती है। वो कहते हैं कि जिस तरह हमारी रूहें जो है वो इस तरह एक दूसरे के साथ अटैच हैं, जिस तरह कंपास के दो फुट होते हैं, लेकिन ये अपीयर, एक जो है वो फुट ड्रॉ तो कर रहा है पेज के ऊपर, लेकिन दूसरा फुट जो है वो अपीयर नहीं होता। वो कहते हैं कि जिस तरह दूसरा फुट अपीयर नहीं होता, लेकिन एक्चुअली जब एक फुट मूव कर रहा होता है, वो ड्रॉ कर रहा होता है, तो दूसरा फुट भी मूवमेंट कर रहा होता है। इसी तरह हमारी रूहें भी एक दूसरे के साथ अटैच हैं। एंड दो इट इज इन द सेंटर sit, yet when the other far dot room, it leans and hearkens after it and grows erect and that comes home. So basically in these lines, this stationary compass foot sits in the center of a paper. When the other compass foot move further away, the stationary foot change its angle to lean in that direction, as if in longing to be nearer to its partner. As the moving foot returns, closing the compass, the stationary foot stands straight again, seeming alert and excited. वो बात कर रहे हैं यहाँ पर कि अगर हम स्टेशनरी कंपास की बात करें तो उसके दोनों फुट होते हैं और एक फुट जो होता है उसको पेपर के सेंटर में रखा जाता है, लेकिन जब दूसरे फुट को जो है वो मूव किया जाता है तो एक जो स्टेशनरी फुट है वो अपना एंगल चेंज कर लेता है और अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है और एक दूसरे से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं। लेकिन अगर हम इन फुट को रिटर्न करें, हम इनकी मूवमेंट को रिटर्न करें और कंपास को एक दूसरे के करीब ले आए, तो स्टेशनरी फुट जो है वो स्ट्रेट खड़ा हो जाएगा, वो अलर्ट हो जाएगा, वो एक्साइटेड हो जाएगा। इस चीज के साथ उसने रिलेट किया है उन दोनों को कि अगर उनको एक डायरेक्शन में मूव किया जाता है, अगर एक जो है वो दोनों लवर्स में से एक अगर मूव कर भी जाता है तो दूसरा जो है वो भी उसके साथ जो है वहीं पर वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा, वो अपना एंगल चेंज कर लेगा। लेकिन जैसे ही उन दोनों को वापस रिटर्न एक जगह पर खड़ा किया जाएगा तो वो दोनों जो है वो स्ट्रेट खड़े हो जाएंगे। Such will though be to me, whose must like the other's foot, obliquely run, the firmness makes my circle just, and makes me end where I begun. So basically in these lines, the speaker's lover, he argues he will be like his stationary foot, while he himself must travel a circuitous indicate route. Her fixed position provides him with the stability to create a perfect circle, which ends exactly where it begins, bringing the speaker back to his lover once again. So इस पूरे के पूरे जो पैराग्राफ में बताया गया वो कहते हैं कि जो कंपास है उसके दोनों फुट की अगर हम बात करें तो दोनों फुट जो है अगर एक मूव करता है, एक ड्रॉ करता है, तो दूसरा फुट भी एग्जिस्ट करता है। फिजिकली अगर वो नजर ना भी आए कि वो कुछ कर रहा है, लेकिन फर्स्ट फुट के मूवमेंट से दूसरा भी मूवमेंट करता है। और अगर हम बात करें एक फुट के मूवमेंट से तो दूसरा जो है
वो अपनी एंगल तो चेंज कर लेगा, अपनी डायरेक्शन तो चेंज कर लेगा, लेकिन जब हम इस फुट को रिटर्न मूव करेंगे और कंपास को क्लोज करेंगे, जो स्टेशनरी फुट होगा वो दोबारा से सीधा खड़ा हो जाएगा और वो अलर्ट हो जाएगा, वो एक्साइटेड हो जाएगा। तो बेसिकली लास्ट 4 लाइन में स्पीकर बात कर रहा है और आर्ग्यू कर रहा है कि अगर स्टेशनरी फुट की तरह हम, अगर वो भी स्टेशनरी फुट की तरह बिहेव करे, अगर वो दोनों भी स्टेशनरी फुट्स की तरह बिहेव करे, कंपास के फुट की तरह, तो अगर वो ट्रेवल, अगर लवर जो है, जो राइटर है, वो ट्रेवल करके दूर चला भी जाएगा, उसका रूट जो है इंडिकेट कर भी रहा है, तो जो लवर है अगर उसकी वाइफ एक फिक्स पोजीशन प्रोवाइड करे, अगर वो जो है वो स्ट्रेट खड़ी रहे, एक फिक्स पोजीशन प्रोवाइड करे, एक परफेक्ट सर्कल के इर्द गिर्द ही जो है वो घूमती रहे, अगर वो उससे बाहर नहीं जाएगी, तो वो दोनों भी जो है वहीं पर दोबारा से, अगर वो दोनों एंड भी वहीं पर करेंगे जहां पर उन्होंने स्टार्ट किया है, और वो जो है एक दिन दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। ये पूरी की पूरी जो है वो लव और डिस्टेंस के ऊपर उन्होंने लिखी हुई है। सेपरेशन के बारे में राइटर ने लिखा हुआ है, लव और सेपरेशन के बारे में लिखा हुआ है, लव और डिस्टेंस के बारे में लिखा है। इस पोइम के अंदर जो है वो बहुत सी थीम्स हैं जिसको हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने क्या करना है, इसकी हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में फर्दर वो भी डिस्कस करेंगे, इसका एनालिसिस भी कर लेंगे जूम की क्लास में। और आप लोगों ने क्या करना है कि आपने इस पोइम की थीम्स निकालनी है और आपने वो थीम्स लिखनी है और इस पोइम की समरी लिखकर जो है वो मुझे नेक्स्ट असाइनमेंट सबमिट करवानी है। इंशाल्लाह जूम मीटिंग में हम इस पोइम का एनालिसिस करेंगे और हम इस पोइम को इन डिटेल जो है एनालिसिस देख लेंगे। जी ठीक है, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।